Good morning, student. Today we are starting here social science for class 8, and this is your chapter 2nd, geography, diverse natural resources of the world. So, in this chapter 2nd, I already explained you about land, land use pattern. Then, in next video, I taught you about the soil, factor of soil formation. Okay, now, today I'll start from types of soil. So, in my previous class, also, I taught you about types of soil. First is alluvial soil. So, in India, we are studying basically six type of soil. One is alluvial soil, black soil, red, yellow soil, laterite soil, desert soil, and mountain soil. So, here, let me explain you first the alluvial soil are formed by the deposition of sediments brought down by rivers. They are very fertile. तो जो alluvial soil है वो सबसे ज़्यादा fertile है, and they are mainly we found in northern plains and coastal plains of our India. ठीक है. Alluvial soil is divided into two main parts. One is khadar and another is bangar. तो khadar is the younger alluvium जो अभी नई नई alluvium form है, and bangar is the older alluvium. Okay. Second, uh, we talk about the black soil. So black soil is other formed from the weathering of igneous rock. ठीक है, जब igneous rock ठंडा हो जाता है उसके बाद black soil form करता है, and they are found in the northern western part of Peninsula Plateau, especially in the state of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, and parts of Andhra Pradesh. ठीक है, black soil is the best soil for the cotton. ठीक है, तो कॉटन का जो क्रॉप है वो सबसे ज्यादा आपका ब्लैक सॉइल में इजीली ग्रो हो जाता है. नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सॉइल दैट इज रेड एंड येलो सॉइल. सो this soil is derived from the weathering of igneous and metamorphic rocks. So it is the mixture of igneous and metamorphic rocks, and we found such type of soil in Peninsula Plateau. Fine. And such type of land or soil is rich of iron component. ऐसी मिट्टी में बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा आपको मिलेगी. ठीक है. Then next, laterite soil are formed by intense leaching in the tropical region due to heavy rainfall. So these soils are infertile. तो laterite soil अपने आप में उन particular areas में मिलेगी जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बहुत जो फर्टिलिटी है इट फ्लोज डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इट इफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो. तो ये जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है. देन वी विल टॉक अबाउट द डेजर्ट सॉइल. सो इट इज वी फाउंड इन बेसिकली राजस्थान, गुजरात, and such type of soil is lack of moisture, humus, and less fertile. ये कम fertile होती है. But if we irrigate such type of soil, तो in some extent we make the soil fertile. तो कुछ हम उसको fertile कर सकते हैं. Next, mountainous soil. So are found in the Himalayan region and on the hill slope. ये hill slope में पाया जाता है in the forest vegetation, and this soil is formed due to the decaying of the organic matter, and we found this soil also less fertile. Okay. Now, next topic, that is soil erosion and conservation. Soil and depletion of the soil are the two major problems associated with soil resources. तो सॉइल के साथ जो प्रॉब्लम होती है, एक तो होता है सॉइल इरोज होना, जो कि नीचे वाटर के साथ इट फ्लोट टू द बॉटम. ठीक है. एंड डिप्लीटेशन, धीरे धीरे इसका कटाव होना, मिट्टी का कटाव हम कह सकते हैं. ठीक है. इससे रिसोर्सेस का भी वेस्टेज होता है. देयर आर मेनी नेचुरल फैक्टर्स लाइक वर्क ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड विच रिजल्ट इन degradations of the soil. Humus factors like deforestation, overgrazing, mining, construction, urbanization, and excessive use of fertilizers and pesticides have resulted in the degradation of soil on a large scale. तो जो सॉइल का डिग्रेडेशन है, इसकी जो फर्टिलिटी कम होती है, सॉइल इरोजन होता है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं. जैसे डिफॉरेस्टेशन है, हम पेड़ों का कटाव करते हैं, ओवरग्रेजिंग करते हैं. ठीक है. माइनिंग कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, अर्बनाइजेशन करते हैं, शहरीकरण हो रहा है, खेतों को काट के उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है. ठीक है. बहुत ज्यादा हम लैंड में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो इससे हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो कम होती रहती है.
Now, soil is the most important natural resource for man as he is directly or indirectly dependent on it. तो हम टोटली सॉइल पर डिपेंड करते हैं. सॉइल नीड टू कंजर्व फॉर सस्टेन प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन. तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सॉइल की प्रोडक्टिविटी को उसको कंजर्व करके रखें ताकि हमारा जो फूड का जो प्रोडक्शन है वो बने रहे. We need to protect the soil from extensive erosion as the formation of soil is very slow process. तो हमें अपने सॉइल का जो इरोजन है उसको रोकना है क्योंकि सॉइल को फॉर्म होने में काफी टाइम लगता है. ठीक है. नाउ मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, हाउ वी कंजर्व आवर सॉइल. So first, afforestation. So planting of trees on wasteland and dewland is helpful in the preservation of topsoil. एफोरेस्टेशन का मतलब है कि अगर हम देखो डिफोरेस्टेशन का अपोजिट है एफोरेस्टेशन मींस वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री ओके सो दैट वी कैन कंजर्व अवर टॉप सॉइल जिससे हम अपनी टॉप सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. यू नो वेरी वेल दैट the roots of the plant having the capacity to hold the soil. ठीक है. तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो करते हैं तो इससे हम अपनी टॉप सॉइल को प्रिजर्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वे इज कंटूर प्लगिंग. सो कल्टीवेशन प्लग the contour lines instead of up and down. The slope will reduce the force of running water down the hills and reduce soil erosion. Contour plugging आपने बेटा माउंटेन एरियाज में देखा होगा जिसमें हम एक मेड़ सी बना देते हैं. ठीक है. उससे क्या होता है कि पानी एक जगह पर रुके रहता है, जो वाटर है वो दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पाता. ठीक है. तो ये बेसिकली हिली एरियाज में ज्यादा इसका यूज किया जाता है. ठीक है. Then next, terrace farming. So cutting down of hill slopes into terrace or steps into retard the flow of running water and result in the conservation of the topsoil. Terrace farming आपको ऊपर पिक्चर में दिख रहा होगा. देखिए ये क्या है, ये टेरेस फार्मिंग है. ये भी बेसिकली हिल एरियाज में मेथड फॉलो किया जाता है ताकि टॉप सॉइल को कंजर्व किया जा सके. ठीक है. देन नेक्स्ट फोर्थ वन that is crop rotation. So successive rotation of crop in agricultural land will help in the protection of soil. So this is also one of the best way we conserve our soil. For example, leguminous crops are grown in rotation with other crops to retain the fertility of the soil. तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो होती हैं जैसे पल्सेस आपकी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसमें ज्यादा होते हैं. तो एक तो उनको हम ग्रो करें, दूसरा लैंड की फर्टिलिटी बनाने के लिए हम रोटेशन का यूज करें. रोटेशन मींस एक पर्टिकुलर लैंड में हम क्रॉप को ग्रो करें, उसके बाद कुछ समय के लिए उस लैंड को छोड़ दें. देन वी यूज अनदर लैंड आफ्टर cutting harvesting the crop from that particular land. Again we conserve the previous land. ठीक है. So this is called crop rotation also. ठीक है. So this is the best way we conserve our soil. Then fifth, construction of shelter belt along the coastal region and arid region. Growing of trees in rows will restrict the force of wind and protect the soil layer. So construction of shelter belt, हमें क्या करना है, अपने ड्राई जो एरियाज होते हैं बेसिकली जहाँ पे हवा बहुत तेजी से चलती है तो जो टॉप लेयर की जो सॉइल होती है उसको हवा अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती है जिससे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो और खत्म हो जाती है. तो वहां पे क्या करना है, वी हैव टू मेक अ शेल्टर बेल्ट. ओके. एंड वी मस्ट ग्रो द ट्रीज इन अ रो. वहां पे हम ट्रीज को एक रो में ग्रो कर सकते हैं ताकि जो एयर है वो टॉप लेयर वाली जो सॉइल है उसको अपने साथ फ्लो ना कर सके. ठीक है. सिक्स्थ वे इज अदर मेथड. Beside, there are other methods like strip cropping or bunding flow fields, use of chemical fertilizers, plucking of gullies, and control of deforestation and overgrazing. तो ये कुछ other तरीके हैं जिनसे हम अपनी land की fertility को बना सकते हैं. And these are the few methods through which we conserve our soil. Okay.